ओके, मेरी आवाज आ रही है? और इनकेस आ रही है तो अपना कैमरा ऑन कर। ये कौन लास्ट वाले 1-2 मिनट में आ जाता है? कोई रोल नंबर? मैं तो एडमिट कर देता हूँ लेकिन अटेंडेंस में वो नहीं आएगा। ओके, तो मैं कह रहा था वॉइस ट्रांस अप्रोक्सीमेशन को हम लिख सकते हैं in terms of the definition of totality of the sequence। तो मैं कह सकता हूँ as मतलब जो हमने अभी definition की कि I can say that this sequence of functions 1 x x square and monomials is total, और कुछ बुक्स ने शायद लिखा होगा complete in C01, the continuous functions over this interval. The question is, can we refine this theorem? Can I find a subsequence of this? Can I find a subsequence of this that is also total, complete or complete in C01? तो क्या मुझे हमेशा ये सारे के सारे मोनोमियल्स लेने की जरूरत है? Wundt's theorem says no, there is no need. अगर मैं ये वाले भी लूं, say xn1, xn2, so on and so forth, such that summation 1 by ni is infinity, तो भी ये total होगी, तो भी span of this thing would be whole thing C01. ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि I can refine it. Actually, I can make it much smaller. क्योंकि मुझे पता है, for example, summation 1 by p is a prime is also infinity. यानी अगर मैं लूं बजाय इनके, मैं लूं 1x raised to power 2, x raised to power 3, x raised to power 5, x raised to power 7, x raised to power 9 को छोड़ सकता हूँ मैं, 10 को छोड़ सकता हूँ, x raised to power 11, और ये बहुत कम हो जाएंगे इवेंचुअली। ये बहुत छोटी सीक्वेंस है। x2 I can go x17 है ना, इसके बाद आएगा 19, फिर शायद आएगा 23, फिर शायद आएगा 2031, यानी fewer members, और उसका क्लोजर भी जो है वो पूरी की पूरी स्पेस देगा, मतलब स्पैन का क्लोजर। So that's Wundt's theorem says that of course this would be true if this summation ni is equal to infinity. अब इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेप करना पड़ेगा, ठीक है? So let's do it. ये क्या हो गया इसको? Okay. So प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम पता ही है कि मैं ये बताता तुम्हें, मुझे याद नहीं आ रहा है ये जो मेरा प्रूफ है 21 बुक से, लेकिन आई थिंक गॉफमैन एंड पैट्रिक ने दिया होगा अच्छे से, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना? गॉफमैन एंड पैट्रिक देखोगे तुम इसके बारे में, मेरे पास है नहीं उसकी हार्ड कॉपी क्योंकि वो शायद आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी थी मेरे पास, डाउनलोड की थी, शायद सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी इंटरनेट पे। ये बहुत अच्छी किताब है, पता नहीं इन्होंने इसको प्रिंट करना क्यों बंद। फंक्शनल एनालिसिस है फर्स्ट कोर्स, तो इसने अच्छे से किया होगा ये। सो अब इसको प्रेप करने के लिए क्या लिखूं मैं? पहली बात तो ये है, ओके, a sequence is total in C01 if and only if it is total in L201.
तो फिर मैं दिखाऊंगा, एक्चुअली मुंड्स थ्योरम में दिखाऊंगा वो जो मैं प्रूव कर रहा हूँ ना, आई विल नॉट प्रूव इट फॉर C01, आई विल प्रूव इट फॉर L201, ठीक है? सो दैट वुड बी द आइडिया। हाँ शायद ये सही नहीं होगा, आई शुड से a subsequence of this sequence, यानी वो पहले इसमें कंटेन होनी चाहिए ना, of this sequence 1x square is total in, हाँ यही सही होगा, C01 if and only if it is total। अब बात ये है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये एक थ्योरम की तरह हम कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। देखो टोटल का मतलब क्या है कि अगर तुम इसमें से कोई कॉम्बिनेशन लोगे दैट वुड बी आर्बिट्ररी क्लोज टू ए फंक्शन हियर, मतलब यहाँ पर भी वही मतलब है, लेकिन यहाँ पे नॉर्म जो है वो डिफरेंट है। एंड ऑफ कोर्स दीज कंटीन्यूअस फंक्शंस, डिफरेंशिएबल फंक्शंस, दे आर Lebesgue integrals, so they belong here, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल्स जो है वो डेंस है, तो ये हम इस वजह से कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स और आल्सो डेंस, और आल्सो व्हाई डोंट यू डू इट, पॉलिनोमियल्स आर डेंस इन L201 या AB भी हो सकता है, तो दैट्स नॉट, मतलब 01 से थोड़ा कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। तो ये तुम्हारा होम असाइनमेंट। अब पॉलिनोमियल्स आर डेंस मींस दैट ये जो ये सीक्वेंस है ये है टोटल इन L201, वही है ना मतलब, क्योंकि पॉलिनोमियल्स आर डेंस इन CO0B का मतलब ये है। अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई सब सीक्वेंस इसमें टोटल है तो इसमें भी वो टोटल होगी, यानी अगर मैं इसको रिफाइन कर सकता हूँ इसके लिए तो इसके लिए भी आ जाएगा, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है प्रूफ अगर मैं कहूँ। सो ओके, प्रूफ इसका कैसे करें? हाँ अच्छा है, मैं इसका कहता हूँ ये गॉफमैन पैट्रिक से तुम ले लो, गॉफमैन पैट्रिक, के वरना हम थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे। उसने इसका प्रूफ किया है, वो छोटा सा है लेकिन मुझे उसको खुद ही रिकॉल करना पड़ेगा, उसमें जाएगा टाइम। गॉफमैन एंड पैट्रिक की बुक से तुम दिखाओगे कि इसकी सब सीक्वेंस अगर इसमें टोटल है तो इसमें टोटल, तो अगर मैं दिखा दूं कोई सब सीक्वेंस ऑफ L201 में टोटल है, यानी उसकी ये प्रॉपर्टी है कि क्या बोलते हैं इसको, उसके जो स्पैन का क्लोजर है वो L201 के बराबर है, तो उसके स्पैन का क्लोजर C01 के बराबर भी होगा। तो ये तुम दो देखोगे गॉफमैन एंड पैट्रिक पे, अगर नहीं हुआ तो वैसे उसमें होगा। हाँ तो फिर मैं करा दूंगा, मैंने बोला ना मुझे इसको मतलब आई कैन फाइंड इट्स प्रूफ, मैं इसको इवैल्यूएट करना है थोड़ा सा, बट उसमें टाइम लगेगा, उसके बजाय है कि हम आगे बढ़े। ओके अब एक और चीज है, ओके हमने किया था हिल्बर्ट स्पेस, अब चूंकि पता है ना L2 का फायदा क्या है, मैंने L2 में हम क्यों जाना चाहते हैं, L2 एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास इनर प्रोडक्ट से काम हो जाता है आसान, इनर प्रोडक्ट, और इट्स हिल्बर्ट स्पेस, यू नो दैट। हिल्बर्ट स्पेस का मतलब है you can break it into two, you can write H, so if you have any closed subspace M of H जो प्रोजेक्शन थ्योरम कहता है, then you can write H as M plus M perp, and then you can actually define obvious projection from H to this closed subspace such that this is continuous linear, जो ना हमें पता है P is onto, मतलब obviously है if Z belongs to H, any Z, that this can be written as M plus M perp as a direct sum, क्या लिख रहा हूँ,
If Z belongs to H, which can be written as M direct sum M perp. Okay, then you can write Z as X plus Y uniquely, where X belongs to M and Y belongs to M perp. You can easily define P from H to M, that is P of Z is equal to X. Then indeed P is linear, P is continuous, वगैरह वगैरह, and range of P जो होगी, obviously it would range over M because of this thing, and kernel of P जो होगा वो M perp होगा. That's again obvious. कुछ करना ही नहीं. You can always do this. Okay, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है, now suppose M is a subspace. वहां पर हमने ये किया है बेसिकली, शायद यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरा प्रूफ दे दूं. वहां पे हमने किया था, in case you remember, वो ये है कि if you have a closed subspace M, if you have a closed subspace M, then there exists a unique Y naught, let me call it X naught belonging to M, such that norm of chalo, for every Y not belonging to M, you have got norm of X naught minus Y is equal to infimum of norm of X minus Y such that X belongs to M. यहाँ पे क्या था, एक यूनिक मेंबर तुम्हें मिलेगा X naught such that this is true, and it is infimum of distance from this vector Y. What is this? This is known as distance from this vector Y to M. Right, the distance, though, it is attained by a vector inside this closed subspace, that's X naught. And then तुमने ये prove किया था, actually this X naught minus Y belongs to M perp. अगर ऐसा है, यानी the shortest distance from Y to, चलो मैं लिख देता हूँ, shortest distance from Y to M is given by the length of this unique vector that belongs to M perp, where of course this X naught is inside M. तो अब इसका मतलब ये है, ये अगर तुम उसको रिवीजन करोगे या देखोगे ऐसे ही, प्रोजेक्शन थ्योरम इन हिल्बर्ट स्पेस, तो उसका मतलब ये जो है, देन अगर ये M perp में है, देन P जो प्रोजेक्शन है, P is a projection from X to this subspace, okay, H to this subspace, H to this subspace, then P of X naught minus Y जो है वो होना चाहिए 0, क्योंकि M पर उसका कर्नल है. That means P of X naught should be equal to P of Y, but X naught M में है और M पे P is identity, है ना? Obviously जो मैंने define किया था ना, ये P of Z is equal to X plus X, जो projection है, then P of X जो होगा वो होगा what? It would be actually P of X plus 0, that is just X, क्योंकि हम इसको disregard करते हैं. So on M it is identity, which means that X naught must be equal to P of Y. Short में जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, I am trying to say Py minus Y, है ना? तो ये जो ये shortest length है, this length is the shortest distance from Y to closed subspace M. This is the shortest distance. Now, अब ये भी पता है, अगर ये 0 है, then Y must belong to M, है ना? अगर ये 0 है, then Y must belong to M, क्योंकि यहाँ पे ये 0 कब होगा? जब Y belongs to M.
because it ranges over m, so इसमें x भी एक element आएगा, तो ये cancel. For any x belonging to m, this would become 0. So this shortest distance would become 0, and it is actually py minus y. Okay. So ये करने के बाद let's prove this as a theorem. मैंने तो ऐसे ही एक, चाहे तो तुम इसको मतलब ये भी प्रूफ ही था जो मैंने किया, लेकिन मैंने थोड़ा पुराना यूज किया, वो क्या बोलते हैं, थ्योरम में लिखता हूं, let x be an inner product space. Should I इसको छोड़ दूं? चलो कर देते हैं. Inner product space a subspace of x should I write it? मैं ऐसे छोड़ना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है, मुझे तो एक हिल्बर्ट स्पेस पे ऑलरेडी ये पता है. So why should I? चलो लिख देते हैं क्या करें. Now let y belong to y is a point of best approximation, is a point, इसको हम कहते हैं point of best approximation. चलो मैं बताऊंगा. Approximation, अगर ये देखो, ये हम कह रहे हैं अगर होगा, मतलब ये assumption है कि y is a point of best approximation, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस में वो हमेशा एग्जिस्ट करता है. चलो वो एज अ रिमार्क लिखेंगे. To x in y if and only if क्या होगा इसको, if and only if x minus y belongs to y perp, and in such a case अगर ये exist करेगा, y is unique. Okay, अब मैं ऐसे लिखूंगा, what is a point of best approximation? वही कि जो ना इन्फिमम है, यानी मैं लिखूं यहाँ पे वही जो मैंने इससे पहले लिखा था, पता नहीं, I think I should have gone straight away. चलो anyway, वैसे शॉर्ट आंसर भी तो देने होते हैं ना एग्जाम में. क्या करें? Given a normal linear space X, you know every Hilbert space is a normal linear space. So हमने जो इससे पहले किया जो Hilbert space के लिए, a subspace and a subspace y of x and x belonging to x, then y not belonging to y is said to be a point of best approximation. पहले तो ये जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस और क्लोज सबस्पेस जो उसकी होती है उसमें हमेशा एग्जिस्ट करती है. of x from y if norm of x minus y naught is equal to infimum of norm of x minus y such that y belongs to y. मतलब it's defined for normal linear spaces, but मतलब ये नॉर्मल लिनियर स्पेस में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस की अगर कोई क्लोज सबस्पेस है तो उसमें ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. इट इज आल्सो कॉल्ड बेस्ट अप्रॉक्सिमेशन. नहीं, इसमें हमें अभी काफी करना है, ये मून्स थ्योरम में टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो इसमें आइडियाज पहले हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन भी लंबी छोड़ी. अब इसका प्रूफ तो ये तो तुम्हें पता चल ही गया जो मैं कह रहा था, इन्फिमम जो हम ले रहे थे.
अब हिल्बर्ट स्पेस में हमेशा एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ना, चूंकि हमें हिल्बर्ट स्पेस को ही डील करना था, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मान सकते हैं वहां हमेशा एग्जिस्ट करता है। Nevertheless, now assume that y is the best approximate to x, to this vector x from the subspace y. Now let z belong to y such that norm of z is equal to 1. Choose it to be now 1. Obviously अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो वहां पे एक ऐसा वेक्टर जरूर होगा. Then if I take u equal to y plus, okay, inner product of x minus y with z, then multiplied by the vector z, this belongs to y, है ना, for all y, for all y belonging to y. क्यों? क्योंकि it's a linear combination of the vectors belonging to y, and y is a subspace. This gives us norm of x minus y, क्योंकि बेस्ट अप्रोक्सिमल है, इनफिमम है, it should be less than equal to norm of x minus u, right? Which implies इसका स्क्वायर भी इसको प्रिजर्व करना चाहिए, which is actually x minus u dot product with x minus u. Now you just substitute the value of u, वो हम next page में करेंगे. यानी you have norm of x minus y का square is less than or equal to, because it is the infimum best approximal है, it is less than equal to x minus u. अब थोड़ा सा लंबा चौड़ा. अब जो u है मेरा, that's equal to y plus inner product x minus y z times z, where z is a vector in y with norm 1. Okay, अब substitute करो तो ये बन जाएगा x minus y plus inner product x minus yz multiplied by the vector z, lamba choda, then I have x minus same thing y plus inner product x minus y z with z. I don't know मैं इसको पूरा expand करूं कि नहीं, मैं तुम पे छोड़ता हूँ. इसको तुम कर सकते हो ना using the properties of the inner product. यानी ये होगा यहाँ पे x, y, x minus y, मैं क्या कर रहा हूँ, यानी ये होगा x minus y minus x minus y z with z, then I would have minus क्या होगा यहाँ पे y प्लस थोड़ा लंबा चौड़ा काम हुआ ये x minus y z z using the properties of the inner product, comma वही same thing y नहीं x minus y minus inner product क्लोज. ठीक है ना. अब ये लंबा चौड़ा फिर से तुम इसको एक्सपैंड करोगे, लेकिन अब मैं क्या करूँ ना, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा जो तुम्हें फाइनली मिलेगा, क्योंकि दैट विल सेव टाइम. मतलब सिंपली एक्सपैंड करना है और उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी इन केस तुम भूल गए हो इनर प्रोडक्ट के बारे में. माइनस मॉड ऑफ समेशन x माइनस y z का स्क्वायर. ठीक है. सो आई थिंक शायद लेस देन इक्वल टू होगा, बट यू जस्ट डू यूज जो अपना है कोशिश इक्वालिटी, बट एक्सपेंशन के बाद कोशिश इक्वालिटी यू शुड गेट दिस. अगर नहीं तो मुझे बता दें. सो इसका मतलब, उसका मतलब क्या हुआ, उसको आई एम गेटिंग दैट minus of this thing is greater than equal to 0, or it means that x minus y z जो है का स्क्वायर, इसको यहाँ लाया मैंने, is less than equal to 0. ये नॉन नेगेटिव है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ x minus y z
is equal to 0 for all z belonging to y with norm z equal to 1, which implies that, well, that's obvious, अब मैं कहूँगा, is equal to 0 for all z belonging to y. You just take any z, any y, any u belonging to y. अब u भी में v belonging to y, then v by norm v पे ये apply करेंगे तो सब v के लिए हो जाएगा using the properties of the inner product. Okay, so which implies that x minus y belongs to y perp. अब conversely, अब थोड़ा हम करेंगे conversely, let x minus y belong to y perp. Thus, for all z belonging to z, देखो अगर चलो मैं ऐसे लिखता हूँ for some y belonging to y, क्योंकि y के अंदर है, it would imply that y, what should I write? Okay, so how should I write it? अगर y minus z belong करता है y पे for some y belonging to y, it implies that for all z belonging to y minus z belongs to y. Is that true? Right. तो y में है तो चूंकि y सबस्पेस है, y is a subspace, अब चूंकि y में है तो z अगर y में है तो y कोई भी एलिमेंट है उनका डिफरेंस y में बिलोंग करेगा. अब ये y perp में है, ये y में है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. It would imply that x minus y minus z is equal to 0, which would imply that norm of x minus z square is equal to norm of x minus y plus y minus z square, and using Pythagoras theorem, because this belongs to y, where the mutually perpendicular vectors हैं, then this is just equal to norm of x minus y square plus norm of y minus z square, which is surely less than, या सीधे मैं लिख सकता हूँ, it implies that norm of x minus y is less than equal to norm of x minus z, क्योंकि of course इसमें हमने नॉन नेगेटिव नंबर एक और ऐड किया है, for all z belonging to y, which means that y is the best approximate to x from y, from this subspace y. Oh, अब simply है uniqueness. Okay, uniqueness. That is, uniqueness के लिए क्या करेंगे? Suppose y, मेरा ये हाथ चिपक जाता है पसीने की वजह से इस बोर्ड के साथ. Suppose y prime is another vector, another best approximate. अब क्योंकि हमने इसका नाम रख दिया best approximate, then तो as we know, अगर ये best approximate है तो y minus y dash would belong to M perp. So it means that x minus y minus y dash, क्योंकि ये y के अंदर है, ये y में वेक्टर है. Now this belongs to, I should write what was y, and this belongs to the perp, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं. अगर कोई बेस्ट अप्रोक्सिमेट है तो उसका डिफरेंस विद x would belong to the y perp. Now then this should be equal to 0, which would imply that, what would it imply? That norm of x minus y prime square is equal to, इसको मैं लिख सकता हूँ, norm of x minus y plus y minus y perp
का स्क्वायर using the same thing, the Pythagoras theorem, good old Pythagoras theorem. यहाँ लिख सकते हैं y minus y belongs to okay. So अगर इसके बराबर है, it implies that norm of y minus y जो है, it is equal to norm of x minus y square plus norm of x minus y square, okay, which is equal to, what is norm of x minus y square? Because they are perpendicular. अब इसमें क्या मैंने कुछ लिखा गलत? हाँ, मैंने वो ऐड भी किया, ये भी किया, तो अगर चूंकि ये, तो ये इस सम के बराबर होगा, तो इसका मतलब वो यहाँ माइनस होना चाहिए. y minus y would be x minus y square minus x minus y square, and of course this would be equal to 0. Why? So x belongs to y. Right. Not here. This should be, actually both should be 0. X minus y per b, x minus yb. This is equal to 0. मैं बताऊंगा क्यों. क्योंकि हमारा जो x है वो कहाँ बिलोंग करता है, ये क्यों 0 है? हाँ, एक चीज कर देते हैं. X minus y perp is the shortest distance. It is a unique. So this is the shortest distance. So this also is the shortest distance from x to y. अब क्योंकि shortest distance तो एक ही होगी ना, shortest मतलब shortest, so it should be x minus y square ही, right? That's equal to 0, which means that y is equal to y dash. Finally, it's over. That is y is unique. मेरी बात यहाँ पे समझ आई? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, बिकॉज x माइनस, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम x टू द सबस्पेस y. दिस इज आल्सो बिकॉज हमने सोचा कि मान लो वो दो वेक्टर्स पे अटेन होती है, व्हेन अगर ये लेंथ तो सेम ही होगी तो ये 0 है, और अगर ये 0 है तो ये वेक्टर अंदर का 0 है, यानी y शुड बी इक्वल टू y माइनस. ओके, अब मैं इसमें रिमार्क में लिखूंगा जो मैंने वहां किया था. For a closed subspace, for a closed subspace of a Hilbert space, there exists a unique, चलो मैं लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिखूं, M of a Hilbert space H, there exists a unique vector x naught belonging to M such that norm of y minus x naught is equal to infimum of y belonging to, just a minute, sorry, मैं चूंकि वहां x नॉट लिख रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. ओके, तो it should be x belonging to M y minus x naught for all y belonging to H, and also there exists a projection, and also H can be written as a direct sum of M plus M perp, and there exists a continuous linear projection P from H onto a subspace M such that P of H is equal to M and kernel of P is equal to M perp. Oh, गलत मैंने लिख दिया, ठीक है.
एक्चुअली थोड़ा सा वायर मैं लिखता हूँ y माइनस एक्स नॉट बिलोंग्स टू m पर। ठीक है ना, ये हम वहां तुमने किया है, वो तो यहाँ से भी हो गया है ना, ये जो हमने थ्योरम किया था। चलो मैं लिख देता हूँ नाउ, सिंस बाय अबव थ्योरम, चलो लिख देते हैं अबव थ्योरम y minus x naught belongs to m perp, it implies that p of y minus, which is equal to kernel of p, so x naught is equal to 0, which means that p of y is equal to p of x naught, that's equal to x naught, since x naught belongs to m. Okay, hence the best approximal of m from y is x naught is p of y. Okay, because x naught can be done where p is the projection of the continuous projection simply of h onto m. Hence the minimum distance, hence the infimum, hence dym, that is the infimum over x belonging to x naught, sorry, x belonging to y length, क्या हो रहा है infimum, पसीने से चिपक रहा है ना, ये जो ये कैब जो अपना ये टैबलेट है ना, ग्राफिक्स टैबलेट, तो हम कहीं तक पहुंच गए अब, is equal to infimum over x belongs to m, norm of x नहीं, y minus x naught, क्या मैं लिख रहा हूँ, y minus x का जो norm है, this is actually norm of y minus x naught, which is actually equal to y minus p of y, where p is the projection of h to m, and of course h can be always written as m plus m. So ये मुझे चाहिए था मून्स थ्योरम के लिए कि दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू y माइनस p ऑफ y, तो ये हमारा पहला स्टेप जो हमें चाहिए था. ओके, लेट मी स्टॉप हियर, कल इसको पूरा करेंगे, वैसे कल भी नहीं होगा शायद, लेंथ ही. ओके, लेट्स स्टॉप हियर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं.